Okay, I think I'm fine now. Okay. Yes. Yes. So today is 21st April, and as we all know that every day at 7 p.m. we come up with the daily current affairs by me, Salik Ahmad, where I ask you questions from today's The Hindu and Indian Express, right? Yes. And we are having here at 7 p.m. I think everything is fine on YT. Yes, up to ठीक है ना? Yes. Yes, I am now on YouTube also. Yes. Yes. Good evening, guys. Good evening. Okay, before moving on, there's a small announcement. We are providing a flat 25% off on all our paid batches. So use the code jackpot25 to get 25% off. Jackpot 25 code use कीजिए, 25% off पाइए हर paid batches में. Okay. Okay. Yes. Let's start. What I do is I give you questions. You have to read the question carefully and then answer it accordingly. आपको करना ये होता है कि आप मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको रीड करना है फिर आंसर करना है. So the first question is in front of you. Read it carefully and then answer it. So this is related with the topic which was in the news yesterday and today in newspapers. Talking about the demolishment of encroachment and all. So basically there is a Delhi High Court judgment regarding it, talking about the entire procedure of demolishing the encroachment. So which of the following Delhi High Court order is related with this? And I have put the quote of Justice Muralidhar, which is from the same judgment of a High Court. It's basically a quote of Nelson Mandela. So you have to tell me that which judgment talks about it. Is it visible, guys? C log bata rahe. People are saying C. Anybody else? Acha, YT pe everything is clear na? Majority are saying C. Oh my god. Anybody from app? Any other opinion? क्वेश्चन ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है जो कि डिमोलिशमेंट ऑफ इंक्रोचमेंट, यानी जो सरकारी जमीन पर मकान बन जाता है या दुकान समथिंग लाइक दिस, उसको डिमोलिश करने का प्रोसीजर, रूल्स, सारी चीज एक जजमेंट है. किससे रिलेटेड है आपको बताना है कौन सा हाई कोर्ट जजमेंट. पीपल से सी, कुछ लोग बी बता रहे हैं. It's not clear. Okay. Anybody else? Actually, I haven't got the right answer. What is the right answer? Shan Bhushan case. Actually, the name of the judgment actually it's nowadays very much trending. This is the name of the judgment. Actually, A is the right answer. Okay. Ajay Makan versus Union of India case. Okay. You can go and read about it in detail. So basically, this Ajay Makan versus Union of India case, I think it happened, a few years back only. So A is the right answer, and in this is the first line written by Justice Muralidhar. He was talking about, he mentioned actually Nelson Mandela's quote. So this is taken from A option. Okay. So this was an article in first page talking about Supreme Court halts eviction drive in Delhi's Jahangirpuri. It was coming at the news. So that is why I've discussed it. Okay. So yes, it talks about that Dushyant Dave went to the court and said that 15 days notice should have been given before the demolition of any, you can say, encroachment. So that was very much in the news. A is the right answer to this question. Okay, the next one is question number 2, which is in front of you. So read it carefully and then answer it. Question number 2 पढ़िए और उसको फिर आंसर कीजिए. Question number 2 is talking about a World Economic Outlook report. ये The Hindu में editorial में था, and that is why I'm asking it. Okay, it was there in the Hindu editorial. So that is the very reason I'm asking it. What is X? You have to tell me. World Economic Outlook report. X has spared the global growth hopes for it and all. What is X? A, B. Good, Ayush Srivastava, very good. I have got the right answer. Rishabh Raj has answered it. Kashish Mahadev, Aryan Jasmine from app has also answered it. Yes, Asmita Yadav, Ishan. Good. Jasmine, you are right. Yes. Adiba, you are right. Kashish Mahadev. World Economic Outlook report कौन सी organization release करती है? So it's neither World Bank nor World Economic Forum nor UNESCO.
It is IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये रिलीज करती है. So this was an article in the Hindu editorial, bumps ahead on IMF's India growth forecast. Okay. So, sorry. Which says that India expects to grow 8.2% this year. ठीक है. So that is why it was very much in the news. तो ये बेसिक पता होना चाहिए. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एक बहुत फेमस रिपोर्ट है IMF की. ठीक है. So it is the right answer to this question. Okay, yes. Mayank, Tyagi, Grishma, Muskan, Bano, Anushka, Jaiswal, Asmita, Ritik Pandey, you all are right. D, International Monetary Fund is the right answer to this question. Let's move on to the next one. The question number 3, talking about the same. देखो IMF कई कारण से न्यूज में. पहली बात तो why it is in the news, because of the previous question. It came in the Hindu editorial. Second thing is the Sri Lanka has gone to the IMF to take loans. ठीक है. अभी रिसेंटली ये न्यूज में बहुत चल रहा है कि श्रीलंका IMF के पास गया कर्ज लेने के लिए. Yes. So that is why IMF is very much in the news. आभाष, प्रशांत सिंह CYC, अनुष्का सिंह C. कोई भी BCD कोई भी आंसर तो यस, वेरी गुड. सुप्रिया पांडे, गुड, वेरी गुड. यस, अदीबा इज आल्सो राइट, एक्स चीफ इकोनॉमिस्ट. एनीबॉडी एल्स? यस, अनुष्का जायसवाल, वेरी गुड, गुड गुड. सो क्वेश्चन ये है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यस, अभिनव राइट. हाँ, इनकरेक्ट अबाउट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में गलत स्टेटमेंट कौन सा है? It is a result of a Bretton Woods agreement of 1944. That is right. Its managing director is Kristalina Georgieva. That is also right. Its chief economist was Geeta Gopinath. Till last year she was. Now Geeta Gopinath. What is the post of Geeta Gopinath now? Deputy chairman. Grishma, you are very close, but you are not exactly right. So chief economist is no more Geeta Gopinath. It's Pierre Oliver Goenchas, है ना? हाँ, डेप्यूटी MD, यस, अनीशा दास, राइट. हाँ, सो 1 2 सही है. दिस इज रॉन्ग, सो आई वाज आस्किंग इनकरेक्ट, सो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सो गीता गोपीनाथ इज नाउ द फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, यशस्वी अग्रहारी, अनीशा दास, JTL, कशिश महादेव, यू ऑल आर राइट, गुड. सो यू कैन सी इट हियर, हेडक्वार्टर्ड इन Washington DC, याद रखिएगा. Kristalina Georgieva is the chairman, या managing director. First deputy managing director is Geeta Gopinath. She is from India, and that is why very very important. Yes, Jasmine Vanshika, you all are right from app. And chief economist पहले Geeta Gopinath थी. Now it is Pierre Oliver Gorenchas. Please remember it. These three are very important, especially this one, because she is from India, so that is why star market. Okay. Yes. Let's move on to the next one. Of course, it is parent organization इसकी, United Nation. To the next one, yes, ये भी देख सकते हैं, दिसंबर में अनाउंस किया गया था फर्स्ट डेप्यूटी MD. सो ये हार्डली 2-3 months ओल्ड न्यूज है, तो इससे सवाल आने की संभावना बनती है. The next is question number 4, which is in front of you. The question number 4 is in front of you. Please read it carefully and answer it. जो लोग देख रहे हैं, please press the like button. जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, please press the like button. What is X? Which article is being talked about? क्या चीज से रिलेटेड, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा कमेंट में. कशिश, हर्षिता, सुप्रिया, समर्थ, Ishan, Anushka. Yes, Adiba has answered it perfectly. Yes, self-incriminating evidence. Yes, Samad, Vasne, Harshita, Unnati from app, Anupama, Shreya. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Yes, Article 20, Clause 3. Yes, Abhash Prasad, Kashish Mahadev. So there was an article written by an IPS officer, R.K. Vij, unfounded apprehension about the act. It's talking about Criminal Procedure Identification Act. ठीक है. In which he has cited a judgment of Supreme Court, and he says that handwritten or signature or impression of thumb, finger, palm, foot, etc. does not come under that Article 20 Clause 3 to be a witness.
अपनी अगेंस्ट विटनेस में ये वाला प्रोविजन नहीं आता है. दिस इज व्हाट ही सेड अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. So basically, the right answer is Article 20, Clause 3B is the right answer to this question. Okay, yes. जो लोग देख रहे हैं, yes, please press the like button, everyone. Okay, before moving on, yes, you can see it here. तो इसमें ये लिखा हुआ है ना कि अगर फिंगर या पाम फुट ये सब का अगर इंप्रेशन लिया जाए तो ये 20 Clause 3 का वायलेशन नहीं है. ठीक है, दिस इज व्हाट ही हैज सेड. यहाँ देख सकते हो है ना. The next is, yes, we are providing a flat 25% off on all the paid batches. So use the code jackpot25 to get 25% off. Jackpot25 code use कीजिए, 25% off पाइए. If you are planning for CLAT 2023, which is supposed to happen in December में CLAT 2023 हो रहा है. Hardly 7-8 months is left, so you can go for this course. Call on this number or mail us here. इस पर कॉल कीजिए या इस पर मेल कीजिए. Use this code jackpot25 and you will get 25% off. Expert guidance by NLU alumni, day-wise study plan, weekly performance test, faculty counseling session, live classes, etc. will be there. Yes. Yes. So jackpot25 code use कर सकते हैं. Avail this discount as soon as possible. The next is question number 5, which is basically related with the same topic. Read it carefully and then answer it. I remember that I think we have discussed these things 1 month back. थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था. Yes, good. Kashish, Harshita, Nisha, Bhash, Samad, Ishan, Shreya, Adiba, Samarth, yes. Unnati, Vanshika, yes. B. Abhinav, Samarth, Violet, Muskan, you all are right. Danish, Fatima, Yashasvi. Bouncer, क्यों bouncer किया? तो simple है. So he has written, the author has written the same article कि उन्होंने ये कहा है कि in this judgment of Supreme Court, it said that thumb, fingerprint, palm, foot, ये सब जो है ना, these are not violative of Article 20 Clause 3, but using this like narco analysis test, polygraphy, brain fingerprinting, these violate Article 20 Clause 3 because of this judgment of Supreme Court. ठीक है, Selby versus State of Karnataka case. ठीक है, so B is the right answer to this question. Yes, Kritika, Vaibhav, Girishma, Priyanka, Bharti, Smita, you are right. B is the right answer to this question. Vanshika, Unnati, yes. So the next one is question number 6. इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में. एक तो आज एडिटोरियल ऑपेड पेज पे आर्टिकल थी ना द हिंदू में. देयर वाज एन आर्टिकल इन द हिंदू जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड. सो ये सब केस की न्यूज द हिंदू के मेन एडिटोरियल में था. मायंक त्यागी, मैंने दिखाया भी था ना आर्टिकल द हिंदू की. यस, anybody? Samarth Vashne has answered it. Adiba is very right. Anushka Jaiswal, Violet, good. Supriya Pandey. Skimmed about it. ठीक है श्रेया सिंह, बट इसको थोड़ा सा मतलब अगर आपने पूरी एडिटोरियल नहीं पढ़ा तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लीजिएगा. बिकॉज ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है. ठीक है, और ये बहुत ही फेमस, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है. इससे पहले हबल टेलीस्कोप था, ये बहुत फेमस था नासा का. ठीक है, हाँ देखो रॉसकॉस्मॉस जो है ना वो रशिया का है. ठीक है, और CNSA जो है चाइना का है. ठीक है, तो ये दोनों तो आंसर का चांस कम ही है बिकॉज जेम्स वेब टेलीस्कोप बेसिकली नासा और उसकी मतलब नासा ने लॉन्च किया मेनली, बट सपोर्टेड बाय अदर्स आल्सो. सो दिस एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस. अब देखो जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में. इट इज अ सक्सेसर ऑफ हबल टेलीस्कोप ऑफ कोर्स, यानी पहले हबल टेलीस्कोप बहुत फेमस था, उसकी जगह पर जेम्स वेब टेलीस्कोप इंस्टेड ऑफ हबल टेलीस्कोप. नाउ द वर्क विल बी डन बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप.
हाँ, it was launched last year from French Guiana which is in South America, है ना, साउथ अमेरिका में एक जगह है आर्यन, ठीक है. So this is the incorrect statement. I was asking incorrect. So ये incorrect statement. Just wait for a second. Hello. हाँ, yes. Sorry, there are some technical issues. ठीक है. So C, NASA is the right answer. NASA and it's you can see it here, है ना. यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलकर लॉन्च किया था. ठीक है. सो सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सी. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट, यस जैस्मीन आर्या, जिन्होंने भी सी आंसर किया, यू ऑल वेरीफाइड. द नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अपने से जाके, जेम्स वेब टेलीस्कोप. ठीक है. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. रीड इट एंड आंसर इट. अभी बफर कर रहा है क्या? आई थिंक इट्स फाइन नाउ. द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये एक्चुअली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं भी आप पढ़े होंगे, हर जगह ये न्यूज था. दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. ये तो नहीं पता. आंसर जो भी एबीसीडी जो भी आंसर बताइएगा आंसर के साथ. बी बी, कुछ लोग बी कुछ लोग डी बता रहे. और जो लोग देख रहे हैं एक बार लाइक बटन प्रेस कर देना एवरीवन. बी. तो आप रीजन बताओ ना, क्या है इसकी जगह पे, क्या होगा क्या नहीं होगा के नाम पे. Yes, good. Ishan Singh has answered it correctly. Economic advisor. Yes, Ajay is also right. Ajay Mehta. The government has appointed A.K. Sood as the principal scientific advisor. तो नए जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बनाए गए उनका नाम A.K. Sood है. And he is a distinguished professor of physics at IISc Bangalore. IISc Bangalore में प्रोफेसर है फिजिक्स की, ये भी बात सही है. ये PM इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन है. ये इकोनॉमिक एडवाइजर विवेक देब्रॉय. सो दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट. ही विल सक्सीड के विजय राघवन. इससे पहले के विजय राघवन थे पीएम इकोनॉमिक प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर. ठीक है. इसके बाद ये बन गए A.K. सूद साहब. ठीक है. विवेक देब्रॉय, प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो. ही इज द चेयरमैन ऑफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है. ठीक है, साइंटिफिक से रिलेटेड नहीं है. Yes, good Nitin Pandey, very good. Incorrect statement B है. So yes, आयुष श्रीवास्तव आ भी सकता, नहीं भी कोई गारंटी नहीं है ना, उस टॉपिक से आ भी सकता नहीं भी. You can see it here in the same article. Professor K. Vijay Raghavan, he succeeds, है ना. The next one is question number 8, which is in front of you. Read it carefully and then answer it. इसको तो मैंने पेड बैचेस में पूरा बताया है. ठीक है. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में आई स्टिल रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. सो जिन्होंने पढ़ा होगा, मेरी क्लास अटेंड की होगी, दे विल इजीली आंसर इट. कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं. अरे एक बार डी लिख दीजिए, बार बार की जरूरत नहीं है. ईशान, अनीशा, सुप्रिया, आभाष, हर्षिता, श्रुति, तान्या कुमारी, अस्मिता, वैभव, यशस्वी, वेला एंड वागीर वेर क्लियर. यस यस, वाजीर नहीं वागीर. अधिपा, प्रियंका, आभाष, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. यस, ईशान, गार्गी, गेंजा, वर्णा, अजय, आभाष, अनुपमा, श्रेया, दानिश. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. अनुष्का, आदित्य, ऋषभ. ऐसा लगता नहीं कॉपी करते लोग, वहां पे लोग ऐप पे लोग बी सब लिख रहे हैं, सबको बी लिख दी. यस, जैस्मीन एंड वैली ने डी आंसर किया. सो द राइट आंसर इज डी. आई हैव टोल्ड यू 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात हो रही है अंडर प्रोजेक्ट 75.
सो प्रोजेक्ट 75 यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों गलत हो गया। INS वार्कशीर इज द 6th वन, तो ये वाला सही हो गया, ठीक है। So it is being mainly manufactured by Mazagon Dock Shipbuilders Limited with the help of French Naval Group, है ना, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है। So D is the right answer to this question. Scorping मतलब पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलता है ना। So D is the right answer. INS Wagshir launched in Mumbai. 6 things to know about 6 submarine under Project 75, ठीक है, इसको पढ़िएगा थोड़ा। D is the right answer to this question, ठीक है। The next one is, when is Civil Services Day celebrated? 21st, 24th, 28th, 26th April. Civil Services Day हर साल कब मनाया जाता है? ए सुप्रिया, विनीत गुप्ता, नितिन, आभाष, वैभव, अभिनव, यशस्वी, आभाष, हर्षिता. Yes, good. Jasmine from app. Actually, today is Civil Services Day. A is the right answer to this question. Yes, Shreya Singh, you can answer it, no problem. Yes, today, Aaj Harshita, Anushka, yes. Today is National Civil Services Day. Yes, Valley, Jasmine, Varsha, you all are right. Vishnu, Nandini. Now, the next question is without option. कोई ऑप्शन नहीं दिया गया. Why is Civil Services Day celebrated today? क्यों आज के दिन यानी 21 अप्रैल को Civil Services Day मनाया जाता है? Why is today Civil Services Day celebrated? कुछ लोगों ने आंसर किया लेकिन कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, कंप्लीट आंसर नहीं किया है. Yes, Mansa, yes, today, Manvarshika, Varshika, right. Sardar Vallabhbhai Patel gave speech regarding, yes, Anushka Jaiswal, Adiba, right. Lord Cornwallis, father says, Vinay Gupta is saying, Vallabhbhai Patel gave speech, yes, Muskan Bano, जिन्होंने ये लिखा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल gave speech, they are actually very near, लेकिन पूरा आंसर दीजिए, पूरा स्टेटमेंट कब कहां कौन से डेट को दिया था कि 21 अप्रैल से सिविल सर्विसेज डे मनाया जाने लगा. एनीबॉडी? देखो एक्चुअली क्या है ना, nowadays the IAS officers are trained in लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी मसूरी, ठीक है. इससे पहले के अंदर मेटकाफ हाउस दिल्ली होता था, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी IAS ऑफिसर्स की, ठीक है ना. सो ऑन 21 अप्रैल 1947, ठीक है, सरदार वल्लभभाई पटेल एक्चुअली he was the first home minister who gave the addresses the IAS professional in Metcalfe House in Delhi, ठीक है. फर्स्ट सच इवेंट हैपन, ठीक है. तो इसीलिए 21 अप्रैल को we observe you can say ठीक है. Yes, and he called them steel frame of India, right? हाँ. So we are providing a flat 25% off on all the paid batches. So use the code jackpot25 to get 25% off. So this is all about today's class. Now I'll be meeting you on a Sunday at 7 p.m. with a very, very important part. One-liner Menti quiz of the last 6 months quiz. Take a last 6 months current affairs. That will be very, very important. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.